Hi everyone, welcome on Yourpedia, and this video is related to the assessment of your documents if you are planning to apply abroad. As I made many videos in the past that students from India are showing more and more willingness to go for higher education abroad, and there is a different trend we are observing, and that is earlier student used to go to any university, they used to go for the country. मेरे को अमेरिका जाना है, मेरे को यूरोप जाना है, कहीं पे भेज दो. But now students are going there with scholarship. I mean, students from India are now becoming quality conscious. They are going to good university, they are going to good profiles in the universities, and they are going there with the scholarship. Yesterday I interacted with one student and he got almost full scholarship in MS, and he used to spend only 1 lakh rupees. So earlier students used to spend 25, 30, 40 lakh rupees, and now they are going with the scholarship, so they are saving that money for their parents. अब मेरा ये जो वीडियो है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू शुड गेट दिस डॉक्यूमेंट असेस्ड बाय द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया, एंड दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. जैसे यूएस के लिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द अल्टरनेट ऑफ दैट इन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इज मोटिवेशन लेटर. So SOP and motivation letter the professors will see very meticulously. On the basis of what you have written in that, the probability of getting your scholarship is decided. Similarly, CV is very very important wherever you apply. तो आपका SOP, आपका CV एंड इंटरव्यू इज बेस्ड अपॉन योर CV, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो माई एडवाइस इज गेट दीज थिंग्स असेस्ड बाय द मेंटर्स ऑफ योरपीडिया हु आर सिटिंग इन दोज कंट्रीज, एंड दे विल गिव यू रियली गुड इनपुट. एंड वाई आई एम सेइंग दैट इज, शायद एक मीटिंग योरपीडिया मेंटर्स की आपको 20 लाख रुपए का फायदा दे दे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? You don't get scholarship, you need to invest 20 lakh rupees. So be very smart and do accordingly, right? Similarly, पर्सनल स्टेटमेंट जिसको डाइवर्सिटी ऐसे भी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेस पे स्कॉलरशिप ऑफर किए जाते हैं. सिमिलरली एकेडमिक स्टेटमेंट, कवर लेटर जो यूरोपियन यूनियन में यूज़ होता है. सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स विच यू कैन सी and they are the requirement of the universities, they are very very important because these will decide your selection, and more important is scholarship. So as I told you, if you want to go to US, don't go there for US, go there for career, go there for your interest in academics, go there in a smart way. Don't go like donkeys, don't spend 50 lakh 40 lakh, go and earn money in those countries. Why you want to spend money? So if you want to throw money in the dustbin, that is another story. But if you want to earn money, if you want to get scholarship, इसको मेटिकुलसली फॉलो करो सारी की सारी चीज़ को, एंड देन अकॉर्डिंगली गो. तो फ्री में आप सेशन कर सकते हैं मेंटर्स के साथ. गूगल फॉर्म अटैच्ड है नीचे, उसको भरो, उसको एग्जीक्यूटिव आपको कॉल बैक करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गो फॉर दिस, राइट? ऑल द वेरी बेस्ट. लुक फॉरवर्ड टू मेंटर ऑल ऑफ यू. थैंक यू.